सर वो उसका पहले वाला भी स्लाइड बाकी था। हाँ, इसके पहले वाला भी स्लाइड बाकी था। इसके पहले वाला स्लाइड, दिस वन, नहीं। यही तो एक्सप्लेन किया था ना मैंने, दैट हाउ दिस जर्मिनेशन टेक्स प्लेस हियर, द सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग इन विद इन द फ्रूट इटसेल्फ, फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन होता है, सो दैट नाउ दिस जर्मिनेशन विल कंटिन्यू टिल द टाइम, जैसे यहाँ पे ये रेडिकल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द रेडिकल, सो टिल द टाइम द रेडिकल टचेस द सॉइल, एक बार रेडिकल ने सॉइल को टच कर लिया, देन दिस रेडिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू द रूट्स and thus the entire plant will develop. ठीक है, so as you can see here we have this fruit here, सानिका घोड़के, एक मिनट, within the fruit the germination will start as you can see here, and when the germination starts the radicals start developing. okay, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं है, शुरू थी, सिर्फ विविपैरस लिख लो, सारे पॉइंट्स में आगे है वो दे देता हूं आपको. okay, and then as I said, the radical continues to grow, the hypocotyle will elongate here in this case, so that the radical starts growing in the downward direction, right? Till the time it touches the soil. Once it touches the soil, then it starts developing into roots, and then the entire plant will develop. ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लांट का डेवलपमेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे इलोंगेशन किसका हो रहा है? इलोंगेशन इज टेकिंग प्लेस ऑफ द हाइपोकोटाइल. ओके, चलो अभी इसको क्या कैसे लिखना है और क्या करना है, सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल प्रोसेस है, सो दैट वी नीड टू रिमेंबर. जैसे द फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रूट इज अटैच्ड विद द पेरेंट प्लांट, सो इट डजंट गेट डिटैच्ड, मीनिंग द सीड्स आर प्रेजेंट विद इन द फ्रूट इटसेल्फ. द सीड्स जर्मिनेट विद इन द फ्रूट इटसेल्फ, फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट होना चालू हो जाता है. हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स एंड द रेडिकल विल इमर्ज आउट फ्रॉम द फ्रूट. Radical will continue to grow till the time it touches the soil. So seedling detaches from the parent plant, and then the radical penetrates into the soil and give rise to the roots. ठीक है, तो seedling पूरा parent plant से detach हो जाएगा, and that is how the young plant, the new plant will start developing. मतलब fruit भी चला जाएगा और seedling भी चला जाएगा, right? And this is how the entire process of viviparous germination will take place. Simple है, बहुत ज्यादा difficult नहीं है. Okay, so you just have to write down all these points. This is point number 1, point number 2, point number 3, 4 and 5. Okay, please start. Done? नो सर। लिखो लिखो. एक बेटा मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं एक. डन सर। Okay, चलो, good. Now
तो ये हो गया हमारा विविपैरस जर्मिनेशन, ठीक है। एग्जांपल्स लिख लो इसका। वन एग्जांपल कैन बी द हेलोफाइट्स कॉल्ड एज द मैनग्रूव्स, ठीक है, हेलोफाइट्स और द मैनग्रूव्स। द वन विच ग्रोज इन द मार्शी एरियाज। Marshy areas मतलब the one which has water clogged conditions, meaning there is excess water present in the soil, ठीक है। And because there is excess presence of soil, so naturally the pores will not be formed, so oxygen will not be trapped, so that's generally called as a oxygen deficient soil. तो वहां पे ये germination होगा, जैसे for example rhizophora is an example of this, or even Sonartia. These are the two examples of the viviparous germination. Okay, rhizophora is one plant which has the fruit, as you can see here how the radicle is growing, and Sonartia another. So यहाँ पे भी आप देखोगे तो radicle is growing, ठीक है। Please write down these examples. Done. Yes, sir. Okay, चलो। Now how does the growth occurs? Growth कैसे होता है? Let us try and understand this. थोड़ा बहुत हम लोगों ने living world में देखा था, if you remember. So there are different types of growths which are there. कौन कौन सा? जैसे first growth is known as the indeterminate, जो plants में generally देखा गया है, that the growth of the leaves, or rather sorry, growth of the stem and growth of the root, ठीक है। So that's going to be indeterminate. Do they fix oxygen in the soil? No, Aditya, they won't fix oxygen in the soil, so their mechanism of getting oxygen will be completely different. Okay, so वो अलग ही प्रोसेस रहेगा मैनग्रोव्स का। Yes, तो sir. ऑक्सीजन फिक्सेशन के लिए काम में नहीं आता है। इट इज जस्ट दैट क्या होता है ना, the seeds seeds if they are sown in the soil, in that soil, or if the seeds they fall in that soil, naturally seed will not get enough oxygen for its development, right? And that is why such type of reproduction will take, or other growth of the plant will take place here, where the seed will germinate within the fruit itself. Okay? Yes, sir. हाँ, अच्छा, पहला जो ग्रोथ आता है दैट्स कॉल्ड एज द इनडिटरमिनेट ग्रोथ, जनरली व्हिच इज सीन इन द स्टेम एंड द रूट्स, ठीक है। इनडेफिनाइट ग्रोथ इन द स्टेम एंड the roots is seen in the plant, and the other one is the determinate, which is usually seen in the leaves, flowers and fruits. बराबर है। flowers will also grow up to a particular time and up to a particular size. Similarly the leaves, similarly the fruit. एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद देन द ग्रोथ ऑफ एक पर्टिकुलर साइज के बाद द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स, द लीव्स, द फ्लावर्स विल स्टॉप एंड देन लेटर ऑन दे विल बी डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज नोन एज द डिटरमिनेट ग्रोथ। तो प्लांट्स में भी हम लोगों को दो टाइप का ग्रोथ मिलेगा, वन इज इनडिटरमिनेट एंड द अदर वन इज डिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट seen in stem and root, determinate seen in leaves, flowers and fruits. Okay, now are there any special places of growth in the plants? यानी अगर indeterminate या determinate growth होता है तो कहाँ पे होता है, especially the one which is indeterminate, तो वो कहाँ पे होगा? तो हम लोगों ने ये प्लांट टिश्यू में भी शायद आप लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा होगा that there are three important meristematic tissues. Okay, so in higher plants the growth will always be localized in the special regions. कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला, now that particular region having the cells is known as the meristem, ठीक है। तो वहां पे जो टिश्यू बनता है that tissue is called as the meristematic tissue, right? And the region is known as meristem. जैसे for example we have the first one here called as the apical meristem, where the cells of this particular meristem are present at the tip of the stem and tip of the root. So they will help in growth. Yes, correct, Deepika. Then we are going to have intercalary meristem, the one which is present between the nodes, ठीक है, जो स्टेम का लेंथ बढ़ाने में काम में आता है, प्लस हेल्प्स इन द ब्रांचिंग पैटर्न, तो ब्रांचिंग में भी काम में आएगा। And the last but not the least is the lateral meristem, which is present towards the periphery of the stem, and it helps to increase the girth of the plant. Girth मतलब जो thickness रहता है plant का, stem का especially, तो उसको बढ़ाने में काम में आता है lateral meristem. Yes, you have to draw this. Okay, so ये तीन अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, करेक्ट, मेरिस्टेम को ही, वैष्णवी, राइट। तो ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं ना, बिकॉज द चैप्टर इज अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अभी हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं।
तो प्लांट में अगर ग्रोथ होना है तो यूजुअली कहाँ पे होता है? सो द ग्रोथ विल टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड lateral meristem. ये क्यों? Because for growth there is one important mechanism required called as cell division, and cell division is possible only in the meristematic tissue and not in the permanent tissue. ठीक है, इसके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी रहेगा. एक लाइन डायग्राम निकाल के रखो, that will help. Done. Yes, No, sir. meristematic tissue, Deepika, is known to divide continuously. रिप्लेस होते रहते हैं सेल्स, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही परमानेंट टिश्यूज आते हैं. मतलब देयर इज अनदर मैकेनिज्म व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स कॉल्ड एज द सेल डिफरेंशिएशन. तो पढ़ते हैं अभी हम लोग ये. डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट का लास्ट स्लाइड. ये वाला. दिस इज लिमिटेड टू स्टेम एंड रूट. हो गया आदित्य? डन सर. मतलब दीपिका, व्हाट डू यू वांट टू से बाय दिस? क्या होता है दीपिका? देयर इज अ सीड. This seed has the plumule, this seed has the radical. Now when the radical starts developing into a root, मतलब ये radical develop हो गया ना, तो develop हो गया मतलब क्या हो रहा है? When I say radical is developing, meaning क्या हो रहा है? When I say stem is developing and then started forming the leaves, मतलब क्या हो रहा है? What is happening here? When I say it is developing, दीपिका, मतलब इधर क्या हो रहा है? ग्रोथ. और ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाउ ग्रोथ विल टेक प्लेस? when there is Cell division. correct. तो मतलब can I say that right since the time the seedling is formed, this entire tissue will start developing, right? ठीक है दीपिका, चल आगे बढ़े. हेलो, आलसी लोग आगे Yes, बढ़े. sir. हाँ. ओके चलो, मेरिस्टेम्स हम लोगों ने 3 टिश्यूज देखे. So meristematic cells, what is difference between seed and seedling? Seed is basically the one which has not developed the radical and plumule, which is present in the embryonic stage only. So that's called as the seed. And seedling is where actually the radical is now developing into a root and plumule into the shoot. Okay, so उसको हम लोग बोलते हैं seedling. वैष्णवी, खुशी दे दिया, खुशी माइक का ऑप्शन. ओके चलो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ना, एज आई सेड, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सो यू कैन सी हियर द शूट अपाइकल मेरिस्टेम. शूट अपाइकल मेरिस्टेम का मतलब क्या आता है? द वन व्हिच इज प्रेजेंट एट द tip of the stem, and then we are going to have the root apical meristem which is present at the tip of the root. So somewhere it is here, it will be present. So meristematic cells have this ability to divide and redivide. जब इनका डिवीजन और रीडिवीजन होता है, then it will lead to the growth of the plant. Yes, Sanika. Sanika, you want to say something? अच्छा, सानिका को माइक ऑप्शन चाहिए. चली गई सानिका.
ठीक है, ओके, ये समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या है पता है? दिस वन, डू यू नो व्हाट दिस इज? दिस इज नोन एज Root hair. रूट हेयर, रूट कैप, रूट हेयर नहीं, दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप। और रूट कैप क्यों चाहिए? बिकॉज दिस टिश्यू इज ग्रोइंग and then there will be friction with the soil particles na, so with that friction with the soil particles it is likely that the tissues will get damaged. So to prevent the damage, therefore the plant's root will have the root cap. Sir, what is root apical? मतलब apical मतलब apex, apex का मतलब आता है टिप, this is the tip of the root ना, suppose अगर ये root है तो ये root का tip है, this one, so somewhere here this tissue will be present, ऐसा, ठीक है। चलो, now this is known as the open form of growth, हाँ, ये growth को हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as open form of growth. Sir, so what is the difference between root cap and root? No, root hairs are the thread-like structure. जैसे for example, if this is a main root, तो ये main root को ऐसे thread-like structures develop होना चालू हो जाते हैं. These are called as the root hairs. And root cap is present only at the tip. इधर ही रहेगा tip पे, बाकी कहीं नहीं रहेगा. Get in this, Aditya? Yes, sir, got it now. Yes, root cap is made up of epithelial, specialized epithelial tissues only. Deepika. लोहिता. चलो, आगे बढ़ते हैं. Now the question is growth measurable? Obviously the answer is yes. No, root hairs will not have root cap. Root hairs are completely different. Root cap is present only at the tip. ये डायग्राम देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो only at this region there will be presence of the root cap. करेक्ट, बाकी ये सारे रूट हेयर से जो साइड से डेवलप हो रहे देखो, और ये कहां से डेवलप होते हैं? दे विल डेवलप फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट ऑन द मेन रूट, करेक्ट, तो वहां से डेवलप होते हैं. बट रूट कैप इज प्रेजेंट ओनली एट द टिप. ये टिप पे रहता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन उधर ही हो रहा है, इसके लिए. Okay, is the growth measurable? Obviously the answer is yes. How we can measure the growth? The growth can be measured by measuring the fresh weight of the organism or the plant, or the dry weight of the plant or organism, or even the length by measuring physically the length of the plants, or the area which is being occupied, तो square centimeters, square meters, square kilometer, whatever जो area रहेगा वो, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है वो पर्टिकुलर प्लांट का या फिर ऑर्गेनिज्म का, उसके ऊपर से, या फिर द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, सो दीज आर ऑल द वेज. लाइक फॉर एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब विल बी मेजर्ड in terms of length by measuring the actual length of the pollen tube. ठीक है, तो आप लेंथ मेजर कर सकते हो उनका, मे बी इन मिलीमीटर्स और इन सेंटीमीटर्स, वॉट एवर जो भी रहेगा वो. So these are the ways and means by which you can measure the length of the plant, or rather you can measure the growth of the plant. तो प्लांट ग्रोथ के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं. So these are the important criterias out of which the length and the cell number becomes very important and the most easiest way. Cell number से हम लोगों को पता चल सकता है कि किस तरीके से प्लांट का ग्रोथ हो रहा है. ओके, संजीवनी को लास्ट स्लाइड. ये दिस वन, संजीवनी, हो गया. चलो, now we will keep our focus on the cell number. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ग्रोथ जब होता है किस तरीके से होता है और क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस व्हिच वी सी इन द ओवरऑल ग्रोथ. जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी इनिशियल फेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट्स कॉल्ड एज द फॉर्मेटिव फेज.
हम लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ की। जब प्लांट का ग्रोथ चालू हो जाता है, दैट टाइम देयर विल बी इनिशियली सेल डिवीजन, सो दैट इज फॉर्मेटिव फेज वेयर ऑल द मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल स्टार्ट अंडरगोइंग सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, and then it starts producing the new cells, and as the number of cells will increase, naturally the volume and the overall growth will take place. ठीक है, तो एक ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। एंड वी ऑल नो दिस सेल डिवीजन अकर्स इन टू डिफरेंट स्टेजेस। कौन कौन से दो स्टेजेस आते हैं सेल डिवीजन के? तो फर्स्ट वन इज नोन एज न्यूक्लियर डिवीजन, दैट्स कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, and the second one is known as cytokinesis, that is cytoplasmic division. So with the help of these two mechanisms, processes or stages, the entire cell division will be completed, and मतलब जब प्लांट ग्रो हो रहा है तो उस टाइम पे सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। ओके, ये वाला स्लाइड चाहिए ऋतुजा? डन? ओके, सो ये दो स्टेजेस है, ये हम लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा था। न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस। तो फॉर्मेटिव स्टेज में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग व्हाट इन दिस पर्टिकुलर फेज, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट, प्लांट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या आएगा? So this naturally will start adding up new cells, because of which the size of the organs will increase. And as the size of the organ is increasing, naturally the size of the entire organism will also increase. So it's a natural tendency. तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, get in this? So that is the effect of the formative phase, or also called as phase of cell division. So now the cell has started dividing, started forming the new cells, तो growth चालू हो गया। Then comes the another important mechanism called as phase of cell enlargement, that's called as elongation phase. Now here the cells are not dividing, but the cell size is increasing. So suppose if we have this division, initial phase division हो गया, उसके बाद you can see that the newly formed daughter cells will increase in size and volume. तो धीरे धीरे इनका साइज और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। सो दैट ऑल्सो एडप्स टू द ग्रोथ। ओके, तो इसकी वजह से भी ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए श्रावणी लोहिता? ये वाला हो गया सर। हो गया, चलो अभी ये सेल एनलार्जमेंट या फिर इलोंगेशन फेज लिख लो। दिस इज द सेकंड फेज। हाँ, डन? हो गया? क्या हुआ नुपुर? नुपुर अभी आई क्या? हाँ, सर इसके पहले कितने पेजेस छोड़ने हैं? कौन है ये? नुपुरी बोल रही है। नहीं सर। हाँ, एक आध पेज छोड़ दे। ओके, चलो ना, दो पेजेस बोल रही है इशिता। ओके, सो यहाँ पे ये सेकंड फेज आ गया। दिस इज नोन एज फेज ऑफ सेल इलोंगेशन, और आल्सो नोन एज द फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट, और आल्सो कॉल्ड एज इलोंगेशन फेज। मतलब अभी यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, बट द साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग। अभी इससे क्या होगा, ठीक है, और ये कैसे होगा? नाउ सबसे पहला तो हाउ दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। सो देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट्स।
मतलब सेल के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म का क्वांटिटी और सॉलिड्स का क्वांटिटी बढ़ने लगेगा. So as you can see here, daughter cells are there, daughter cell is there. So the solutes will start entering in. Naturally, endosmosis will take place क्योंकि concentration of solutes in the cell will be more and outside it will be less. So naturally the water starts entering in. Once the water enters in by endosmosis, the cell will become turgid and becomes enlarged. Right? So this is how enlargement will take place. So more cellulose is added to the cell wall, because of which it starts expanding. And the large vacuole in the center of the cell will also help to maintain the turgidity. तो यहाँ पे ये सेल एनलार्ज होके टर्जिड होना चालू हो जाएगा. ठीक है, क्या कैसे होगा? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन विद इन द सेल विल इंक्रीज. सोल्यूट बढ़ गए तो वाटर एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा. वाटर एब्जॉर्प्शन चालू हो गया तो सेल विल स्वेल अप. तो इस तरीके से एलोंगेशन या फिर एनलार्जमेंट होगा. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये श्रुति. यही चाहिए सर. फिनिश्ड. यस सर. Okay. So now more cellulose is added so that the cell wall will expand. और जैसे cell wall expand हो जाएगा, naturally अंदर से vacuole का भी enlargement होगा या फिर vacuole will also enlarged, and that will help in making this particular cell turgid. ठीक है, तो इससे ये सेल टर्जिड होना चालू हो जाएगा. एक मिनट. ओके, हो गया. इज दिस डन? ठीक है. So this is basically the phase of elongation, enlargement or the elongation phase. अभी इसमें क्या होगा? The enlargement of the cells will result in considerable increase in size and weight of organs. पहले डिवीजन हुआ तो ऑर्गन डेवलप होने लगा, मतलब ऑर्गन का साइज बढ़ने लगा. एनलार्जमेंट से ऑर्गन का साइज प्लस वेट दोनों भी बढ़ना चालू हो जाएगा. And thus, if all the organs they undergo such events and such mechanism, then naturally the entire plant will grow. तो पूरे प्लांट का ग्रोथ होना चालू हो जाएगा. फिर रहेगा आपका सेकंड फेज, दैट्स कॉल्ड एज फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट. ओके, इसको ये पॉइंट लिख लो. Finished?
Done, sir. Complete, sir. असं करायचं. हा, 1 मिनिट हा बच्चों. ओके, सॉरी. हो गया. साई प्रसाद आ गया मैं. अच्छा, तेजस्विनी मैम, ये बैच सिर्फ औरंगाबाद का और नवी मुंबई का है. सो नासिक स्टूडेंट्स आर नॉट देयर इन दिस बैच. नेक्स्ट लेक्चर में आप आ जाइए. दैट इज 4:30. ओके. तेजस्विनी मैम, हेलो. ओके, चलो. तो ये हो गया हमारा सेल एनलार्जमेंट और इलोंगेशन फेज. एंड द लास्ट वन इज द सेल मैच्योरेशन और आल्सो कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन. नाउ व्हेन आई से सेल मैच्योरेशन, मतलब क्या? The cell here is differentiated. मतलब all the cells have started taking up their own function. तो इन्होंने अपना खुद का फंक्शन ले लिया. सो दे हैव स्टॉप्ड डिवाइडिंग. इनका डिवीजन अभी बंद हो गया. सो वी कॉल दैट एज मैच्योरेशन फेज. सो इलोंगेटेड सेल्स अंडरगो मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, एंड thus they will start developing different tissues. तो इससे अलग अलग टिश्यूज बनना चालू हो जाएंगे. एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक है. सो दे विल अटेन अ परमानेंट साइज एंड फंक्शन. एक परमानेंट साइज आ जाएगा उनका, फंक्शन विल रिमेन फिक्स्ड, सो इट वोंट चेंज थ्रू आउट द लाइफ. एंड देन एज आई सेड, इन दिस पर्टिकुलर फेज द सेल डिवीजन विल स्टॉप. एंड दिस क्या हुआ? And this will help in the physiological differentiation, will help with the cells to perform a particular function. यानी जैसे for example cell differentiation होगा तो some cells will, group of cells will develop the phloem, some group of cells will develop the xylem. तो उसमें भी अलग अलग tissues होते हैं ना, जैसे xylem parenchyma, xylem fibers, then we have tracheids या फिर companion cells. तो ये सब बनना चालू हो जाएगा.
ठीक है, सो दैट्स नोन एज द सेल डिफरेंशिएशन। ये वाला स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। हाँ यही है। नहीं, इसके बाद का ये और आगे। तो इसके बाद तो यही तो था सर लास्ट वाला स्लाइड। हाँ, लास्ट स्लाइड। लास्ट वन। हाँ बस यही सर, यही। Yes, correct, Deepika. So that is what I said na earlier also. Meristematic tissue will only develop into permanent tissue. मतलब permanent tissue अलग से नहीं बनेगा, meristematic tissue से ही ये सारे tissues बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें simple permanent tissue and complex permanent tissue. तो simple क्या रहेगा? The one which is formed by only one type of cell. Complex meaning the one which is formed by more than one type of cell. जैसे मैंने xylem और phloem की बात की है ना, जाइलम, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, 4 अलग सेल से ये बना है, 4 अलग टिश्यूज से। करेक्ट, वैसा ही फ्लोएम का भी रहेगा। ये आदित्य। So these permanent tissues are formed when these simple tissues, meristematic tissues, go under differentiation process. Yes, so the cells of the meristematic tissue will undergo differentiation, but the below process will continue ना, वो रुकेगा नहीं। Okay. मतलब सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन विल कंटिन्यू। सपोज ये एक सेल है, इसने डिवाइड किया तो इसके 2 सेल बन गए, बराबर है? Yes sir. ठीक है, अब ये 2 सेल का क्या हो रहा है? ये दो सेल का होगा सेल इलोंगेशन, Yes sir. राइट। लेकिन यहां से ये जो प्रोसेस है डिवीजन का, ये तो रुका नहीं है ना, दैट हैज कंटिन्यूड। Yes sir. So this elongated cells will now develop into the permanent tissue. Okay So sir. this mechanism will continue as it is, and that is how it helps in growth. ठीक है? Yes sir. Yes sir. The growth will not stop after permanent tissue. When the permanent tissue develops, that tissue will not grow. But as meristematic tissue is found throughout life in the plants, therefore growth will continue in the stem and roots. Get in this, Dia? Yes sir. हाँ, बट फ्लावर की बात करोगे, लीफ की बात करोगे, फ्रूट्स की बात करोगे, तो अगेन इट विल बी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ओनली। ठीक है? Yes sir. चलो लिखो, हो गया ये लिख के? यस सर। Okay. Now, this is basically cell maturation and cell differentiation. So what are the important points to remember? During differentiation, the cells attain a permanent function and loses the capability to divide. As I said earlier, ability to divide will be lost. Further, the cell will not be able to divide. बंद हो जाएगा. ठीक है? Why? Because the permanent tissue is formed, so it has stopped dividing now. So this is a very important character of the permanent tissues. ठीक है? इसको लिख लो एक बार. Done? Shall we? Yes, sir. चलो, good. तो ये तो क्या हो रहा है? हाँ? Done? Done.
ओके हो गया, फिनिश्ड। खोल दे बंदा होता। नो सर। अरे इतना टाइम लगता है एक सेंटेंस के लिए? सिर्फ इतना ही लिखो, परमानेंट टिश्यूज विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, खत्म। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी ना ये मैकेनिज्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, तो उस टाइम पे देयर वाज नो स्पेसिफिक फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैज ओनली वन फंक्शन, दैट इज फॉर द ग्रोथ, so they have only one character, that is cell division. But when the permanent tissues are formed, we say that the permanent tissues will form and then they will start taking up their own specific function. मतलब cells का क्या हो रहा है? Differentiation. So what do we mean by differentiation? It is the ability of a plant cell to form different type of cells. अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. Now when I say different type of cells, naturally every group of cells which is forming a specific tissue will have a different function. ठीक है, तो टिश्यू के हिसाब से इनका फंक्शन भी बदलते जाएगा. सो ऑल दी प्लांट सेल्स which has this ability to form a different type of a cell is known as cell differentiation. ओके तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है. अभी ये एक पॉइंट पहले लिख लो, उसके बाद थोड़ा और पढ़ते हैं. हो गया? हाँ. Okay. Now what happens during differentiation? होता क्या है? A cell undergoes few structural changes. क्योंकि क्या हो रहा है? Now the cell has started taking up its own function. उसने अपना खुद का फंक्शन ले लिया. जैसे फॉर एग्जांपल some of the group of cells will become say parenchyma, some of them will become arenchyma, some of them will become collenchyma, some of them will become say chlorenchyma. ठीक है, तो अलग अलग टिश्यूज बनने लगा. Some cells will start forming the xylem vessels and xylem tracheids. Some cells will start forming the phloem fibers या फिर sieve tubes and companion cells. तो कितने सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनना चालू हुआ. Meaning all the cells, since they are performing a different function, so naturally they have to undergo the structural changes as per the function of that particular tissue. ठीक है, so the changes will take place here within the cell wall and the protoplasm. जैसे for example cell loses protoplasm to form tracheary elements, क्योंकि tracheary elements मतलब xylem tracheids. तो xylem tracheids जब बनते हैं ना, तो they lose protoplasm, मतलब they will lose the entire cytoplasm. So we consider that cell as dead cell because now it will be helpful for carrying the water, क्योंकि xylem tracheids का वो काम होता है. तो मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन चालू हो गया. एंड ऑल्सो द सेल वॉल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, मीनिंग देयर इज डेफिनेट चेंज विच इज सीन इन द सेल वॉल एंड अ चेंज सीन इन द प्रोटोप्लाज्म डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टिश्यू. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज से फॉर एग्जांपल इट इज सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स एलिमेंट अगर बनते हैं ना, तो द सेल विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये सेल ऐसा दिखेगा. The protoplasm will be intact, but this particular region will start forming a plate-like structure. यहाँ पे ऐसा एक plate-like structure बनना चालू हो जाएगा, which will have the perforations. इसको हम लोग बोलते हैं sieve plate. Okay? और ये sieve plate को यहाँ पे इस तरीके से perforations रहेंगे. So this is known as a sieve plate, and this will help in transmission or rather transport of transport of the food substances, but cytoplasm will not be lost. मतलब ये एक चेंज आ गया इस सेल में, तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया आपका sieve tube. Are you getting this? मतलब जब सेल में डिफरेंशिएशन होता है प्लांट्स में, दैट टाइम द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विल स्टार्ट चेंजिंग. समझा? समझा सबको? हेलो Yes, sir. यस सर. लोग सो गए?
सोए नहीं ना कोई? नो सर। हो गया लिख के? और हाँ हो गया। Yeah, sieve pores are what basically Deepika the one ये जो है ना यहाँ पे जो मैंने निकाला हुआ है ना, this is known as sieve plate. ठीक है, this is called as the sieve plate and this sieve plate has the pores. इसको होते हैं pores. Okay? ठीक है? No, Aditya, you cannot. हाँ बराबर श्रावणी, यू आर राइट, लेकिन चॉइस नहीं अपने पास. डन, फिनिश्ड? अरे हो नहीं. Done, sir. Okay, now these are all differentiated cells. So differentiated cells में there won't be any cell division. So these cells will not be able to divide. But there are exceptions. ठीक है? Generally differentiated cells में division होता नहीं है. As I said, but there are certain exceptions. अब ये क्या होता है? So what happens here is that a differentiated cell, मतलब this particular cell has taken up permanent function, permanent shape, size, and function. But still, in certain cases, in certain parenchymatous cells, the region parenchymatous cells region they will start regaining, मतलब they will start redeveloping the ability to divide. मतलब जो differentiated cell था वो वापस undifferentiated हो गया. ये क्यों हो रहा है? It is only in certain cases when it is required. ठीक है? Now this mechanism where the differentiated cell again goes back, मतलब वो पीछे जाएगा and starts dividing again, meaning like an undifferentiated cell. So we call this mechanism as de-differentiation. Okay, so it is known as what? It is known as de-differentiation. So this happens during secondary growth in dicot. Now what is secondary growth? तो आप लोगों ने प्लांट के ना स्टेम देखे होंगे अलग अलग टाइप के. कुछ प्लांट के स्टेम्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, बराबर है, और कुछ प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं वो एकदम ब्राउन कलर के होते हैं. यस, करेक्ट आदित्य एंड सानिका वालिम्बे. So that brown colored stem is known as the bark or also called as the cambium. तो bark of a tree या फिर cambium जो develop होता है we call that as secondary growth. तो secondary growth कैसे होता है? This secondary growth takes place by the mechanism known as de-differentiation. Correct? So interfascicular cambium, yes, woody areas. Interfascicular cambium and the core cambium are formed by de-differentiation. तो यहाँ पे ये interfascicular cambium है, ठीक है, जो blue color का है. So it has now started developing into a, and this one is the core cambium. So both these cells are formed by de-differentiation. तो इन दोनों में भी de-differentiation होता है. ठीक है, तो जो कॉर्क होता है या फिर कॉर्टेक्स का जो सेल्स होता है, राइट, दीज सेल्स विल अंडरगो डी डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म. तो एग्जैक्टली क्या होता है? डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, बट अगेन अच्छा यहाँ पे अभी ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ठीक है. तो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या हुआ है? The cell which had earlier lost the capacity to divide has regained this. Regain क्यों किया? क्योंकि उसको दूसरे अलग स्ट्रक्चर्स बनाने थे from the previous one only. लेकिन अभी जैसे ही ये अलग स्ट्रक्चर्स बन गए, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बन गया, कोर कैम्बियम is now also formed. So the next step which follows here is that this de-differentiated cell again lose capacity to divide. फिर से वो बंद हो जाता है, तो वो मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन. करेक्ट? क्योंकि इसने क्या किया? डिफरेंशिएटेड सेल्स ने कॉर्टेक्स बना दिया. अभी कॉर्टेक्स से मुझे क्या बनाना है पहले समझ लो, बाद में स्लाइड्स दिखाता हूं. अभी कॉर्टेक्स, सपोज अभी फॉर एग्जांपल वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अभी ये ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने क्या बना दिया? कॉर्टेक्स. अभी कॉर्टेक्स बनाया मतलब क्या हो गया?
डिफरेंशिएशन हो गया, मीनिंग इट हैज स्टार्टेड टेकिंग अप इट्स ओन फंक्शंस और कॉर्टेक्स का सेल हैव स्टॉप्ड डिवाइडिंग। लेकिन ये कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट फॉर्मिंग दी कैम्बियम और रादर कॉर्क कैम्बियम लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक कॉर्क कैम्बियम बना रहे मतलब इनमें क्या हो रहा है, डी डिफरेंशिएशन। जैसे ही कॉर्क कैम्बियम बन जाएगा, वंस द टिश्यू इज फॉर्म देन दिस पर्टिकुलर टिश्यू शुड रिमेन परमानेंट। मतलब फिर से कॉर्क कैम्बियम के सेल्स क्या हो जाएंगे, दे विल लूज दिस एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब फिर से वो परमानेंट हो जाएंगे, वापस परमानेंट हो रहा है। इसके लिए हमने उसको नाम दिया है रीडिफरेंशिएशन। री मतलब फिर से। आर यू गेटिंग दिस? नुपुर समझा मैंने क्या बताया अभी? सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? लिखने के लिए मैं देता हूं टाइम, लेकिन पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, कंटिन्यूटी में मैंने पढ़ाया। तो तीन मैकेनिज्म्स है, ठीक है। सो जैसे रीडिफरेंशिएटेड सेल्स मैच्योर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो तीन मैकेनिज्म आएंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला आएगा डिफरेंशिएशन, मतलब परमानेंट फंक्शन आ गया। कुछ सेल्स में फिर से एक बार वो डिवाइड होना चालू हो जाते हैं, तो वी कॉल दैट एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन होने के बाद डिफरेंट ऑर्गन स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। वंस दे आर कंप्लीटली फॉर्म, अगेन द सेल विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, सो वी कॉल दैट एज रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मैकेनिज्म्स बाय विच द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल टेक प्लेस। अब समझा सबको ये? यस और नो? Yes, sir. गुड। हाँ, अभी Yes, कहां से लिखना है मुझे बोलो। some parenchymatous. ये वाला? हाँ, हाँ लिखो। सर इसके पिछू का संजीवनी, इसके पीछे का ये संजीवनी। हो गया है लिख के, डिफरेंशिएशन वाला, डी डिफरेंशिएशन वाला हो गया क्या? नहीं, लिखो। डन। हाँ, मेरा बिल्ला अच्छा है, नो फ्रैक्चर, बच गया। दे दिया सानी का। अरे पता नहीं वो कहाँ गिर गया या कहीं पैर अटक गया था, उसका तो स्वेलिंग था उसके पैर पे, अभी भी है, बट नाउ इज फाइन। कल हमने उसका एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में यस्टरडे इवनिंग, थोड़ा लेट इवनिंग जाना पड़ा हम लोगों को, बट देन एक्सरे वाज नॉर्मल। हो गया है लिख के? श्रुति इज आस्किंग सर आपका सेकंड बेटा क्या? ओके, ये हो गया आपका डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के बाद आएगा री डिफरेंशिएशन। डन।
Yeah, completed, sir. ओके चलो, तो ये हो गया हमारा दो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. द फर्स्ट वन इज द डिफरेंशिएशन, सेकंड वन इज द डी डिफरेंशिएशन, एंड द थर्ड वन इज द री differentiation. Okay, now we have a scientist here, Julius von Sachs. Now he basically developed the concept of grand period of growth. ठीक है, इन्होंने एक बताया था कि there is some a particular time or a particular period where the growth of the plants will be seen maximum. It was called as the grand period of growth. Now what is this? The time interval from the formative phase to the maturation phase. ठीक है, जो बीच में जो सेल डिवीजन होता है जो काफी रैपिड रहता है, so that is considered as the grand period of the growth. So this is observed in all the cells, organs or organisms undergoing growth. हर एक growth जिसमें जिस किसी organism में growth हो रहा है वहां पे आपको ये phase 100% मिलेगा. ठीक है, so he just gave this particular process mechanism as the name as grand period of growth. Name of the scientist is Julius von Sachs. Okay, तो इनका ये theory. मैं just 2 मिनट में आया, तब तक आप लोग ये लिख लो. Okay, shall we? क्या हुआ श्रुति, तू क्या पूछ रही है? सेकंड बेटा नहीं, वो बिल्ला है मेरा, कैट. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, now this is about the basic concept of the growth. Now this is rate of growth during 3 phases. अब ये थोड़ा सा मेजर करेंगे तो नेचुरली जब सेल डिवीजन होता है तो दैट टाइम द रेट ऑफ ग्रोथ इज गोइंग टू बी हाईएस्ट. Okay, so this is like size and weight of the plant, and this one is the time. So how this rate of growth can be measured? So this is initial phase, that's called as the formative phase, right? जो पहला phase होता है तो वहां पे rate of growth will be like this. Then suddenly the growth will start increasing, एकदम बढ़ जाता है. This is called as elongation phase, correct? So growth यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, and then later on it will be stabilized. फिर ये stabilize हो जाता है. We call this as maturation phase. So it is almost like a S-shaped curve. So we call this as the sigmoid curve. Okay, so the rate of the growth
during these phases will be like this. So maximum is going to be during elongation. Cell elongation जब होता है तब growth सबसे ज्यादा दिखता है plants का, and then once the maturation takes place the growth will stop. मतलब उस particular area में growth will come to halt, so it will remain as it is. Yes, you have to draw this particular diagram. Okay, so this is how the rate of growth can be seen during these different three phases. Finished? एक minute, just give me a minute. This curve is called as the sigmoid curve. Sigmoid. Okay. अरे हाँ रे श्रुति, श्रुति मेरे पीछे ही पड़ी। आऊंगा औरंगाबाद भी आऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ लिया इन अ ग्राफिकल मैनर, सो इट फॉर्म्स अ सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, सो अ वाइट ग्रोथ इज बेसिकली अ वाइटल प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट एन इररिवर्सिबल इंक्रीज इन any organism or its part with respect to its size, shape, volume and dry weight. तो एक टिपिकल डेफिनेशन हो गया आपके लिए फॉर द ग्रोथ। हाँ, आप आओगे तो बिल्ली को भी लेके आना, उसको संभालेगा कौन? और तुम लोग संभालोगे तो फिर पढ़ेगा कौन?
मुझे पता ही था तू हम बोलेगी। इतना आसान है क्या? चलो लिख लो डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। हाँ, ऑलराउंडर है हम। पहले मार्क्स लेके आ श्रावणी एग्जाम में, ऑलराउंडर। डन। हेलो। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सजेशंस आ रहे हैं मुझे। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द ग्रोथ? तो उसमें ना बेसिकली वी हैव एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके सर, एक डेफिनेशन आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी। यस यस, बोथ आर राइट इशिता, बोथ आर करेक्ट डेफिनेशंस। ओके, तो अभी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट्स द ग्रोथ, अफेक्टिंग द ग्रोथ? वन इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब एक्सटर्नल, द अदर वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला आएगा लाइट, फिर आता है टेम्परेचर, देन कम्स द वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो ये सारे कौन हो गए? एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, which affects the rate of growth. Okay, whereas intrinsic factor में we have genetic and hormonal factors, right? तो उसमें genetic and hormonal factors होते हैं, so they are basically responsible for the intrinsic growth. Genetic मतलब क्या? The genes are such that they will favor or they will affect the growth of a plant, and of course the hormones. तो आप लोगों ने शायद पहले भी हॉर्मोन्स पढ़े होंगे, प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दोज आर आल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ओके, नाउ अ टिपिकल ग्रोथ कर्व विल बी सीन हियर। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, rather not directly, but it is with respect to the mechanism of photosynthesis. So photosynthesis will continue at the optimum temperature and light, right? If it reduces, the rate of photosynthesis will reduce. If it increases the beyond optimum temperature, the photosynthesis will stop. Similarly for water and oxygen, it depends on the amount of water present in the soil. It depends on the amount of oxygen being trapped within the soil pores. So it all depends on that, the growth will be affected. Nutrients, of course, if the sufficient nutrients are not there, then the rate of growth will be slow. If it is sufficient, then the growth will be optimum, सबसे ज्यादा रहेगा. Okay, so these are all extrinsic and intrinsic factors. But a growth curve जो अभी मैंने आपको बताया था, that it is S-shaped or also known as the sigmoid curve. So it appears like this. तो इसके अलग अलग फेजेस है ग्रोथ कर्व के, कौन कौन से? सो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस फर्स्ट फेज जो एकदम ग्रेजुअल रहता है, दैट्स कॉल्ड एज द लैग फेज और इनिशियल ग्रोथ फेज। ओके, ये वाला यहां तक रहता है मोस्टली, सो दिस इज नोन एज द लैग फेज और इनिशियल ग्रोथ फेज। Then comes the log phase or exponential phase. Exponential phase में जनरली क्या होता है in plants? Exponential phase में there will be cell elongation. Exponential मतलब एकदम ज्यादा हो रहा है, और उसके बाद आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इट विल कम टू स्टैंड स्टिल, मतलब वो उतना ही रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। सो वी कॉल दैट एज स्टेशनरी फेज और स्टेडी फेज, जहां पे ऐसे प्लेट्यू बनना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉ करो इसको भी, ये जो मार्किंग मैंने किया है, दीज आर ऑल द मार्किंग्स फॉर दीज 3 इंपॉर्टेंट फेजेस। ठीक है, एक्चुअली इसमें लॉग फेज में 2 आता है। वन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो समवेयर यहां तक आता है, और उसके बाद देखो ये ग्रोथ थोड़ा सा भी स्लो हो रहा है ना, ऐसे कर्व आ गया, मतलब ये ग्रोथ स्लो हो गया। सो दिस इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पे बेंड हो गया, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा इसके लिए उसको बोला गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और उसके बाद जब ये कम होने लगता है, व्हेन इट स्टार्ट्स बिकमिंग स्टेशनरी और स्टेडी, वी कॉल दैट एज नेगेटिव एक्सेलरेशन।
ओके तो ऐसा ये पूरा सिग्मॉइड कर्व आता है एंड दिस आल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट्स. ओके जस्ट राइट दिस डाउन. सबका हो गया, श्रावणी का हो गया. डन. एक मिनट. हाँ हो गया. ओके now this is with respect to the time. अब ये जो था ना, जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे the growth is going to be little slow. गौरी पाटिल, क्या हो गया गौरी? अच्छा इसको माइक चाहिए. ये कौन है? न्यू स्टूडेंट. चालू आहे. हेलो. श्रुति तुझे भूख लगी है तो तू वैसे भी खा सकती है ना, मैं कहाँ देख रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो. ओके तो यहाँ पे ये दिस इज इनिशियल फेज विच इज नोन एज, ये वाला जो फेज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे लैग फेज. लैग फेज. लैग इसके लिए क्योंकि ये लैग हो रहा है, मतलब स्लो डेवलप हो रहा है. ठीक है. सो इनिशियल फेज इज गोइंग टू बी लिटिल स्लो. सो न्यू सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड हियर, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है. लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, द ग्रोथ बिकम्स रैपिड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड सेल डिवीजन. along with the rapid cell division there will be rapid cell elongation. ओके तो सेल इलोंगेशन होगा एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट कब आएगा? व्हेन द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स हैव टेकन प्लेस. मतलब सेल डिवीजन बंद हो गया ना, मतलब ग्रोथ उधर रुक गया. गेट इन दिस? and that is how it has become stationary. Steady ban gaya. Why? Because the differentiation of the cells have taken place here in this case. So this is how the entire mechanism of the growth curve can be understood. सर Yes, you can write the same in the same diagram all these things, no problem. Madhurani, हाँ बोलो, कोई तो भी सर बोल रहा था. हेलो. एक मिनट. हाँ मैकबुक का बैटरी लो हो गया.
Finished? Yes, sir. Okay. ठीक है. Now what do we mean by growth rate? ये तो हम लोगों ने देखा growth curve, बराबर है, जिसमें ये लैग फेज रहेगा, फिर आएगा लॉग फेज, फिर आएगा स्टेडी फेज स्टेट और स्टेशनरी फेज. करेक्ट. तो ये 3 फेजेस में ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ग्रोथ रेट? So growth rate is basically increased growth rate per unit time is known as the growth rate. ठीक है. Increased growth per unit time is called as the growth rate. Now how does an organism or its parts they grow? जैसे for example we have a cell which is now dividing. जब इनका division होता है तो one cell will give rise to 2 cells. So the growth occurs by production of new cells by cell division. तो सबसे पहला तो सेल डिवीजन होगा और उससे ग्रोथ होना चालू हो जाएगा. एंड प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स कैन अकर इन 2 डिफरेंट वेज. कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज नोन एज द अरिथमेटिक ग्रोथ एंड द सेकंड वन इज नोन एज द जियोमेट्रिक ग्रोथ. आप लोगों को शायद मैथ्स में ये था एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो वैसा वाला ये ग्रोथ रहता है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड द जियोग्राफिक. यस, एपी था. करेक्ट. Done. Yes, sir. ओके. नाउ दो टाइप के ग्रोथ रेट्स आते हैं. ग्रोथ रेट विल इंक्रीज इन 2 डिफरेंट वेज. कौन कौन सा? सबसे पहला द फर्स्ट वन इज नोन एज एपी, सॉरी अरिथमेटिक ग्रोथ, एंड द सेकंड वन इज नोन एज जियोमेट्रिक ग्रोथ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि अरिथमेटिक कौन सा लास्ट वाली चाहिए आदित्य? So that growth rate one. Done, sir. एक मिनट. हाँ, okay. Let's see one by example. Can you hear me? Hello, students. Yes, sir. सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ, sir. हाँ, नहीं, बीच में इंटरनेट करंट ये हो गया था. इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था मेरा. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू. ओके. हाँ, चलो. नाउ द ओवरऑल process of development of the plant, meaning growth अगर होता है तो it will definitely by cell division, that is mitosis. ठीक है. So here one cell will divide to give rise to 2 cells. तो इस तरीके से multiplication होगा. ठीक है. Whereas the other cell जो divide हो चुका है उसमें से other cell will start differentiating. ठीक है. तो suppose एक cell है, for example we have one cell here. This one cell when it divides mitotically like this, then out of that
this will further divide mitotically, but this cell will differentiate. फिर वापस वही होगा कि ये सेल डिवाइड हो जाएगा और ये वाला सेल कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, लाइक दिस. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सबको ये? सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज अरिथमेटिक ग्रोथ. ठीक है, दिस इज नोन एज द अरिथमेटिक ग्रोथ, राइट? जैसे अभी यहाँ पे दिया होगा शायद उन्होंने कि कैसे होता है ये. जैसे फॉर एग्जांपल द डिवीजन ऑफ वन सेल हैज टेकन प्लेस टू गिव राइज टू टू सेल्स. Out of these two daughter cells, this one daughter cell will divide to give rise to further two daughter cells, whereas the second daughter cell will differentiate. So this is a differentiated cell. Okay, फिर डॉटर सेल में डिवीजन होगा तो उसमें से एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना देगा, लेकिन ये वाला जो सेल है वो हो जाएगा डिफरेंशिएट और पहला वाला एज इट इज. And this is how the growth of the plants will be seen. So naturally arithmetic growth में क्या होगा? Growth of the plant is not going to be very rapid. ठीक है, moderate growth रहेगा and it will slowly continue to grow. So this is how the mechanism will take place. So where this entire arithmetic growth will be observed. So this arithmetic growth is observed at the roots. ठीक है, तो ये आपको roots में मिलेगा. So this is observed in the elongation of the roots. जब रूट elongate होते हैं या फिर roots का जब growth होता है, so that time this entire mechanism will be observed. So the length of the organ will increase with the time. So this is known as arithmetic growth. इसमें किसी को कुछ problems है? Yes, easy है ना, ज़्यादा difficult नहीं है. Hello. Sir, could you please show the last slide? हाँ, ये वाला. तो इसका ये डायग्राम ड्रॉ करना है. हाँ, आप लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने किया था वैसा आप लिख करके रखो, तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस में काम में आएगा ना. 2 साल याद रखना इसको. डन. इसके बाद वाला स्लाइड. हाँ Sir, before this. अच्छा, बिफोर दिस ये वाला. Yes, sir, done. ओके, इससे भी पहले वाला. नूपुर क्या कर रही है? नूपुर सो रही थी क्या? ये हो गया नूपुर? हाँ ओके, सबने कर लिख लिया ये. So arithmetic growth will be observed at the tip of the root where there is elongation of the root which is taking place. So this helps in increasing the length of the organ. Okay, तो structures का organs का length इधर बढ़ेगा. So how do you plot the length of organ per unit time? कैसे plot करेंगे? तो जैसे यहाँ पे height of the plant है and this is the time which is taken. So it's going to be like this. So it is known as the linear growth curve. तो जब arithmetic progression होता है, so that time the growth curve is going to be a linear one, but it's going to be very steady growth, continuous and steady growth. ना रैपिड ना स्लो, एक ही स्पीड में ये ग्रोथ चालू रहेगा. सो यहाँ पे arithmetic growth में this is going to be a linear growth curve. Is it clear? क्योंकि डिवीजन ही वैसे हो रहा है ना, 2 सेल में से एक सेल डिवाइड हो रहा है, दूसरा सेल मैच्योर हो रहा है, फिर एक सेल डिवाइड होगा, ये वाला सेल मैच्योर होगा, फिर ये वाला सेल डिवाइड होगा तो ये वाला सेल मैच्योर होगा. सो एज यू कैन सी हियर इट इज इंक्रीजिंग एट अ पर्टिकुलर रेट, है ना. सो यहाँ पे ये ग्रोथ होते जा रहा है बराबर. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्टेडी ग्रोथ. सो वी कॉल दिस एज लीनियर ग्रोथ कर्व. इज इट क्लियर? Yes or no? Chal. Good. Now, if we have to express this mathematically, arithmetic growth को हम लोग mathematically कैसे express कर सकते हैं? ये वाला last slide श्रावणी.
तो कौन सा? दिस वन. ओके, अभी मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. अभी इसमें क्या होता है? लेंथ ऑफ द ऑर्गन एट द टाइम T इज डिनोटेड एज LT. लेंथ ऑफ द ऑर्गन एट टाइम T, यानी जब हमने मेजर करना चालू किया तब. Then length of organ at time 0 is L0 and growth rate, that is elongation per unit time, that is R. ठीक है, elongation per unit time or the growth rate. So that will be denoted as R. Get in this? So this is how this arithmetic progression may the mathematically expression can be written like this. So it is LT is equal to L0 plus RT, जिसमें T is basically the length of the organ, then 0 is basically the elongation length of the organ at time 0, and R basically denotes the R will denote the growth rate. Graph is simple, beta. It is like this. ठीक है, this is growth, this is time. ऐसा ग्राफ है. तो मैथमेटिकल इक्वेशन है अरिथमेटिक ग्रोथ का, so that you need to write it down. चलो, नेक्स्ट वन इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ. जियोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब क्या आता है? जिसमें डबल होना चालू हो जाएगा. ओके, नाउ अरिथमेटिक ग्रोथ विल बी लाइक दिस, जिसमें one cell is dividing, another is maturing. Yes, Will you please show the last slide once again? No sir, इससे भी पहले वाली. Yes sir, this one. Done sir. ओके. अभी जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसमें एज वी नो one cell is dividing, another is maturing. फिर one cell is dividing, another one is maturing. But in geometric growth, after mitosis, all the daughter cells retain the ability to divide. Okay, जैसे for example, one cell has divided to give rise to two cells, so these are the two daughter cells. Both the daughter cells will divide equally like this. फिर इनमें वापस डिवीजन होना चालू हो जाएगा like this, and as you can see that the growth is going to be an exponential growth. एकदम रैपिड ग्रोथ होता है. so it results in increase in the, इसमें साइज और वेट ऑर्गन का एकदम से बढ़ना चालू हो जाएगा, because this is known as the geometric growth, जो जनरली फ्रूट्स में होगा, क्योंकि फ्रूट will develop in a particular time period only ना. एक पर्टिकुलर स्पैन में ही फ्रूट डेवलप हो जाता है, जो एकदम छोटा होता है बाद में एकदम बड़ा हो जाता है. सो दैट इज नोन टू शो द जियोमेट्रिक ग्रोथ. ठीक है, सो इफ वी प्लॉट दिस पर्टिकुलर साइज ऑफ ऑर्गन पर यूनिट टाइम, देन इट विल शो अ टिपिकल सिग्मॉइड कर्व. करेक्ट, तो इसमें आएगा एक टिपिकल, सानी का एक मिनट ना, इसमें आएगा एक टिपिकल सिग्मॉइड कर्व, जैसा हमने पहले पढ़ा वैसा है. So there will be a lag phase, but then there will be sudden rise in number of cells called as the exponential phase, and then after a particular time it comes to standstill, so stationary phase. Okay, so the sigmoid curve will be shown here in the geometric growth, and in case of arithmetic growth, the graph which is shown is going to be a linear graph, मतलब straight line, that is called as a linear graph. ठीक है, सो ये हो गया आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए अभी तुम लोगों को? तो जियोमेट्रिक ग्रोथ का फर्स्ट स्लाइड से चाहिए. ये देखो, यही ना. डन. Sir, in geometric growth, there will be no differentiation. देयर विल बी डिफरेंशिएशन ना, जब स्टेशनरी फेज आएगा तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, इसका मतलब स्टेशनरी फेज आया ना आगे,
स्टेशनरी फेज कब आएगा? जब डिफरेंशिएशन होगा तभी, ठीक है। Yes, sir. Done, sir. समझा ये? सो द ज्योमेट्रिक ग्रोथ में इट विल ऑलवेज इंक्रीज द साइज और वेट, ओके, ऑफ द ऑर्गन. Finished? Sir, can you show the graph? This is the graph. Sigmoid curve. This graph is observed in the geometric growth. इशिता, ये geometric growth का ग्राफ है. Done? Chalo, good. And how is the mathematical expression of the geometric growth? So it will be WT is equal to W0 e raised to RT. Here the final size at the time t is WT. ये final size है. उसके बाद initial size, that is weight, height and number at time 0 will be W0, and growth rate, that is elongation per unit time, is R, and t is of course the time. ठीक है, so that is the R. So इस तरीके से ये दिया गया है. So R also stands for efficiency index. So it is basically a measure of ability of the plant to form the new cells. Efficiency index मतलब क्या कि plants कितना efficiently नया cell बना पा रहा है. So that is how the R will denote or indicate. Okay, so this is a typical mathematical expression for the geometric growth. Okay, another important point. Done? Done, sir. Okay. Chalo. Now measurement and quantitative comparison. Sir, अगर आप last देखें, क्या last line? हाँ. Okay. आगे बढ़े. हो गया Yes, क्या? sir. अच्छा, अभी है ना कंपैरिजन है, मेजरमेंट एंड क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ द ग्रोथ. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस टू लीव्स, बराबर है. इसमें दिस इज लीफ ए एंड लीफ बी. नाउ सी द कंपैरिजन हियर. इनिशियल you can say surface area, initial surface area of the leaf of A is 5 centimeter square, but final surface area is 10 centimeter square. मतलब डबल हो गया.
बराबर है। यहाँ पे लीफ ए का जो एरिया है वो डबल हो गया। लीफ बी इज ऑलरेडी अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें इनिशियल सरफेस एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द फाइनल सरफेस एरिया। अगर लीफ ए के साथ कंपेयर करेंगे सो इट शुड कम एज 100, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंस्टेड इट इज ओनली 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। So meaning here we can conclude that the relative growth of leaf B is less than the leaf A because the leaf B is already grown sufficiently. So initial stages में the growth is going to be rapid. As the growth comes to a particular level, then the rate of growth will slow down and then later on it will stop. So ये एक best example है कि कैसे हम लोग ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ये बहुत ही इनिशियल फेजेस में है। दिस इज ऑलमोस्ट डेवलप्ड लीफ, ठीक है। सो यहाँ पे दो द साइज ऑफ द लीफ इज लार्ज बट द rate of growth is less as compared to this leaf. So the rate of growth may not be directly related to the size of the leaf या फिर size of the particular organ or a tissue of the plant. समझ में आ रहा है सबको ये? Yes or no? Hello? हाँ, चलो Yes, हो गया। sir. ये एग्जाम्पल लिख लो, राइट, ग्रोथ रेट वाला। फिनिश्ड? फिनिश्ड? Done, sir. Okay, chalo. So now this is how the growth can be observed and understood. So relative growth rate is basically the measurement and comparison of total growth on the common basis, whereas absolute growth rate will be the measurement and comparison of total growth rate.
रिलेटिव का मतलब क्या आता है? इट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ ऑन द कॉमन बेसिस, ठीक है। सो टोटल ग्रोथ का एक कंपैरिजन होता है, दैट्स कॉल्ड एज द रिलेटिव ग्रोथ, whereas absolute growth is basically the measurement of the comparison of the total growth of that particular organism। मतलब यहाँ पे प्लांट के कोई पर्टिकुलर पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स का कंपैरिजन होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस, ऑन द कॉमन बेसिस, whereas यहाँ पे क्या होगा? एंटायर प्लांट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ, राइट। तो ऐसे ये दो अलग अलग टाइप का टर्मिनोलॉजीज है। सो दिस विल कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज द ग्रोथ, क्योंकि दो पार्ट्स आते हैं इसमें, प्लांट ग्रोथ डन सर। ओके, जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। उधर हाँ, और 4:30 बजे आ जाओ वापस, 4:30। बाय बाय। अभी खा ले श्रुति कुछ तो भी। Shall I stop this? चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं आधे घंटे में। Bye, sir. यस।